अब समय आ गया है कि इस्राएल अपने किए अपराधों की सजा भुगते। दुनिया के देशों और राजाओं से इस अपील का अनुरोध है कि उन्हें इजराइल के साथ सभी संबंधों को तोड़ देना चाहिए और उसे उसके अपराधों के लिए सजा देनी चाहिए। In recent times, the issue of Israel's actions has gained significant attention worldwide. There have been allegations and evidence of human rights violations and unlawful use of force by Israeli authorities. As a result, there is a growing call for accountability and justice from the international community. Many countries and leaders from around the world are urging for a resolution to the conflict and are advocating for Israel to face consequences for its actions. The appeal is not only for the cessation of all relations with Israel but also for the imposition of penalties for its crimes. This call for justice is based on the principles of human rights and international law, which emphasize the importance of upholding the rights and dignity of all individuals. It is the responsibility of the international community to ensure that these principles are upheld and enforced. The world has witnessed the devastating consequences of conflicts and the suffering of innocent civilians. It is now time for the global community to take a stand and ensure that Israel is held accountable for its actions. The pursuit of justice and the restoration of peace are essential for the well-being and stability of the region. While the path to resolving this conflict may be complex, it is important that nations come together and work towards a peaceful resolution. The continued support and pressure from the international community can play a crucial role in encouraging Israel to address the allegations of human rights violations and take steps towards reconciliation. It is only through a collective effort and commitment to justice that we can move towards a more peaceful and equitable world. The time has come to stand up for the principles of human rights and ensure that no wrongdoing goes unpunished. एक मुमताज फ़लस्तीनी कारकुन बरगोत के दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि ये नंबर नहीं, ये वो बच्चे हैं जिनके ख्वाहिशात और ज़िंदगी का हक इंसानी तारीख के सियाह तरीन बाबूहे में से एक की राख से पैदा होने वाली अक्सर बैन अल-अक़वामी गुफ्तगू का मरकज़ रही। इसराइली फ़लस्तीनी जिसकी जुड़े 20वीं सदी के अवाइल तक गहरी एक गैर हलशदा सियासी तातुर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की अलामत बन चुकी। हमने मरूफ सियासी थ्योरिस्ट नोम चोम्स्की के साथ एक इंटरव्यू का टुकड़ा काट। ये एक जालिम मजलूम मुतहर्रिक का एक क्लासिक केस है जहां ताकत का तवाज़ुन बहुत ज्यादा एक फरीक के हक में। दुनिया खामोशी से खौफ और हरास देख रही है क्योंकि मकबूजा इलाकों में हालात बदस्तूर खराब होते जा रहे। इंसाफ और एहतसाब की सदाएं हर गुजरते दिन के साथ बुलंद होती जा रही। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए क्या कर सकती। फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड फॉलो के साथ एक इंटरव्यू से किट्टू आलमी यकजहती की ज़रूरत। अक़वाम को इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात का असर जायज़ा लेना चाहिए और अफराद को अपनी हुकूमतों से मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर देना। खुलासा यह है कि जिन अहम निकात पर बहस की गई वो फ़लस्तीनी हलाकतों की तशवीशनाक इस तनाज़े में इसराइल का किरदार और आलमी कार्रवाई का मुतालबा। दुनिया इन मज़ालिम से आंखें बंद नहीं कर। अब वक्त आ गया है कि ममालिक इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात का असर जायज़ा लें और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए पाबंदियां आयद करने पर गौर। याद नाइंसाफ़ी के सामने खामोशी ही साथ। अक़वाम और अफराद के लिए एक इखलाक़ी लाजिम है कि वो अपनी हुकूमतों पर अमल के लिए दबाओ। तभी अमन और क्रॉसफायर में फंसी अनगिनत मासूम जानों के रोशन मुस्तक़बिल की उम्मीद हो सकती। ये इंसानियत के लिए एक इम्तिहान, ऐसा इम्तिहान है जिसमें दुनिया नाकाम होने की मुतहम्मिल नहीं हो। In a world where truth often gets muddled in the noise of politics, one fact stands out as a stark reminder of the reality we often choose to ignore. Every 3 hours a Palestinian child becomes a victim of Israeli aggression. Shocking, isn't it? Cut to snippet from an interview with Dr. Mustafa Barghouti, a prominent Palestinian activist. The world needs to understand these are not numbers, these are children with dreams, aspirations, and a right to life. Israel, a nation born out of the ashes of one of the darkest chapters in human history, has often been at the center of international discourse. The Israeli-Palestinian conflict, a dispute with roots as deep as the early 20th century, has become a symbol of an unresolved political deadlock and human rights violations. Cut to snippet from an interview with Noam Chomsky, a renowned political theorist.
It's a classic case of an oppressor-oppressed dynamic where the balance of power is overwhelmingly in favor of one side. The world has watched in silent horror as the situation in the occupied territories has continued to deteriorate. The cries for justice and accountability grow louder with each passing day. The question that arises here is, what can the international community do to hold Israel accountable? Cut to snippet from an interview with Richard Falk, former UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories. There's a need for global solidarity. Nations must reevaluate their relations with Israel, and individuals must urge their governments to take a stand. To summarize, the key points discussed are the alarming rates of Palestinian casualties, Israel's role in this conflict, and the call for global action. The world cannot turn a blind eye to the atrocities committed. It's high time that countries reassess their diplomatic ties with Israel and consider imposing sanctions to ensure accountability. Remember, silence in the face of injustice is complicity. It is a moral imperative for nations and individuals alike to pressure their governments into action. Only then can there be hope for justice, peace, and a brighter future for the countless innocent lives caught in the crossfire. This is a test for humanity, a test the world cannot afford to fail.